वेलकम टू माय चैनल। लॉन्ग स्क्रीनशॉट ऑप्शन ज़्यादातर रेडमी या सैमसंग के रिसेंट फ़ोन्स में अवेलेबल है, पर आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप किसी भी फ़ोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से लॉन्ग शॉट ऐप डाउनलोड कर लेना है। फिर इसे ओपन करना है। एक्सेसिबिलिटी में जाके लॉन्ग शॉट ऐप को इनेबल करना है। इसके बाद अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स ऑप्शन को इनेबल करना है। इससे आप जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेंगे वहाँ पे ये आइकॉन फ्लोट करेगा। इसके बाद आपको कैमरा ऑप्शन में टैप करना है, जिससे आपको स्टार्ट ऑप्शन मिलेगा। अब आप जहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वहाँ पे जाना है, फिर स्टार्ट ऑप्शन में टैप करना है। अब आपको धीरे धीरे बॉटम तक स्क्रॉल करना है ताकि पूरा पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए। इसके बाद आपको डन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट का भी ऑप्शन है, जिससे आप स्क्रीनशॉट को कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं। आप किसी वेब पेज का भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो एंड लेट मी नो अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरीज या क्वेश्चंस हो। बाय बाय, टेक केयर।